Some 89 million years ago, India was an island lying away to the south. But it drifted northwards, pushing up the sediments between it and mainland Asia. Over millions of years, the sediments lying between crumpled up and rose to form the Himalayas. तख्ते सुलेमान केपी के पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद एक बुलंद तरीन पहाड़ जिसकी हाइट 11,440 फीट है। रिवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन पहाड़ों में आकर यहाँ पर इन्होंने कयाम किया था और इसको पश्तो में कैसे गर कहा जाता है। द फाउंडिंग फादर ऑफ पश्तून्स कैस अब्दुल रशीद बाबा का मजार भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसे कैसे गर कहा जाता है। डेरा इस्माइल खान से रगासर गांव तक गाड़ी में, फिर वहां से 3 दिनों की ट्रैकिंग है जो कि इंतहाई खतरनाक और बहुत मुश्किल है, लेकिन टॉप पर पहुंचकर आपकी सारी थकावट खत्म हो जाती है और आपके ट्रिप के पैसे पूरे हो जाते हैं और आप ये फील करते हैं जैसे आप
बादलों से ऊपर आ गए हैं। सिंध में बर्फ़बारी का तस्वुर करना एक ख़याली तस्वुरात की तरह लगता है, लेकिन सिंध में एक जगह ऐसी है जहाँ पर खूब बर्फ़बारी होती है और सर्दियों में तो पहाड़ की चोटी बर्फ़ से ढक जाती है। जी हाँ, जिस चोटी का नाम हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं, यानी कि गोरख हिल, वो इसी कीर्थर रेंज में पाई जाती है, जिसे गोरख हिल कहा जाता है। गोरख एक कुदरती मर्तबा है जो 5,700 फीट से बुलंदी पर वाक़ है और ये कीर्थर पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा है जो मगरिब में बलूचिस्तान के साथ पूरे सिंध की सरहद को अहाता करता है। The Central Highlands lie in the northern part of the Peninsular Plateau. As we move further down, we can see this triangular region spread over a part of the Indian Peninsula. This is the Deccan Plateau. It lies to the south of the Narmada River, with the Satpura Range acting as its base in the north. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the edges of the Deccan Plateau. The Satpura Range flanks its broad base in the north. Towards its eastern extension lie the Mahadev Hills and the Kaimur Hills, which are found in Madhya Pradesh, and the Maikal Range, which is found in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The Deccan Plateau is slightly tilted, such that the western side is a little higher in elevation. That is one of the reasons why many rivers like the Mahanadi, the Krishna and the Godavari flow eastwards. Interestingly, the plateau is not limited to this triangular region. A part of the Peninsula Plateau extends in some of the northeastern states of India, namely Meghalaya and Assam. Locally, this part of the plateau is known as the Meghalaya Plateau, the Karbi Anglong Plateau and the North Kachar Hills. Today, the Meghalaya and Karbi Anglong plateaus stand detached from the main peninsula block. Do you know why? Well, it is believed that when the Himalayas were being formed, the movement of the Indian plate towards the northeast exerted such a great force that a fault line was created in the process. This fault line was created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau. Years later, the depression formed was filled up by the deposition activity of the numerous rivers that drained the region. On the western side of the Deccan Plateau, you can see these long stretches of hill ranges running parallel to the western coast. These hill ranges are the Western Ghats. Though the Western Ghats are mostly continuous, there are some gaps in these ranges. These are called passes. The Thal Ghat, the Pal Ghat and the Bhor Ghat are some examples. They allow passage through these mountains. So, how high are these mountains? Well, the average height is around 900 to 1,600 meters. Now, this might seem less compared to the greater Himalayas that have an average height of 6,000 meters. The height of the Western Ghats gradually increases from north to south, where some of the highest peaks of the Western Ghats are found. The Anamudi peak in Kerala, with a height of
2,695 meters is the highest peak in the Western Ghats. In Tamil Nadu, the Todabetta peak near Ooty is also quite high, with an elevation of 2,637 meters. Another interesting feature of the Western Ghats is the role they play in the rainfall pattern of the region. The Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley in the north to the Nilgiris in the south. These hill ranges are parallel to the eastern coast. But do you notice that they are not as continuous as the hills in the Western Ghats? They are irregular, with many rivers cutting their way through the hills. These rivers drain into the Bay of Bengal. Compared to the Western Ghats, the height of the hills in the Eastern Ghats is quite low, averaging about 600 meters. That being said, the Eastern Ghats is home to famous hill ranges. The Shivaroy Hills, the Javadi Hills, both of these are located in Tamil Nadu. The highest peak of the Eastern Ghats is the Mahendragiri, which is 1,501 meters tall. So, now you have learned the extent of the Peninsula Plateau and how the Western Ghats are different from the Eastern Ghats. In this video, we're going to learn how plateaus are formed. A plateau is a flat, elevated piece of land that is higher to the surrounding land area. There are two kinds of plateaus, dissected plateaus and volcanic plateaus. Dissected plateaus look like this. These are formed due to upward movement in the earth crust. One side of this plateau will have a slope. Basically, when two continental plates collide, that is how mountains are formed, right? Even plateaus are like mountains, except it has a flat top. So even dissected plateau is formed due to slow collision of tectonic plates. A good example is the Colorado Plateau in US, Tibetan Plateau, Mexican Plateau, and Patagonia Plateau. And the second one is volcanic plateaus. They are formed by numerous small volcanic eruptions that slowly build up over time, forming a plateau. We already know that a plateau is an elevated piece of land. When lava continuously flows out of a volcano, with time, lava gets accumulated in the form of layers. And that is another way plateaus are formed. Some examples of volcanic plateaus are the Columbia Plateau in the northwestern United States, the northern islands of New Zealand. In India, Malwa Plateau and Deccan Plateau is of volcanic origin. दोस्तों आज के वीडियो में हम भारत के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में से एक नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 to 320 किलोमीटर है। ये हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया के बीच एक ट्रांजिशनल जोन के रूप में कार्य करता है। दोस्तों इंडिया नॉर्दर्न प्लेन्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और उनकी सहायक नदियों के एलुवियल डिपोजिट्स द्वारा गठित भारत का एक एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव हिस्सा है, जिसे मेनली 3 भागों में विभाजित किया गया है। नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न पार्ट को पंजाब प्लेन्स कहा जाता है। ये इंडस और उसकी सहायक नदियां जैसी झेलम, सतलुज, रवि और ब्यास द्वारा निर्मित है। ये प्लेन पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली को कवर करता है एंड इसका एक बड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में है। दूसरी द गंगा प्लेन्स है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। ये प्लेन बांग्लादेश का मैक्सिमम हिस्सा कवर करता है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी शामिल है। तीसरी है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा में फैला हुआ है। In this video, we will learn how deltas are formed. These are landforms created by deposition of sediment that is carried by a river. We know that when rivers flow, it carries a lot of sediments and rocks. The greater the flow, the more sediment it will carry. As soon as the flow of the river slows down, sediments in rivers get deposited. You will notice that large heavier particles like pebbles, rocks and sand are deposited first. After that, lighter material like silt and clay gets deposited. So what I'm trying to say is that you will find these deltas where the speed of the river is slow. When river starts to move slowly, that is when the sediments get accumulated. Deltas usually occur where rivers enter an ocean, sea, estuary, lake, reservoir, etc. Apart from these places, you will find deltas at places where the river moves slowly. That's all you have to remember.
تھر دنیا کے قدیم ترین صحراؤں میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق اس قدیم دور سے ہے جو 4 ارب 7 لاکھ سال قدیم ہے۔ تھر براعظم تھر پار کر رقبے کے اعتبار سے صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، تھر اور پارکر، جس میں تھر کا مطلب ہے خشک خطہ اور پارکر کے معنی اس طرف کے ہیں، یعنی کہ خشک خطے کے اس طرف۔ تھر کے مشرق میں کوہستانی علاقہ ہے۔ کوہستان کے ان پہاڑوں میں چکنی مٹی اور معدنیات کے خزانے چھپے ہیں۔ اس کے دامن میں نگر پار کا چھوٹا سا قصبہ آباد ہے۔ مغرب میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ شاداب علاقے ہیں۔ میرپور خاص تھر پارکر کا مرکزی شہر ہے۔ یہ آموں کی پیداوار کے لیے بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے۔ میں ہم آپ کو پاکستان کے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی پاکستان کے چند بڑے صحراؤں کے متعلق بتائیں گے۔ دوستو، پاکستان میں بین الاقوامی اہمیت کے حامل 4 بڑے صحرا موجود ہیں جو پاکستان کے تقریباً 10% رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان صحراؤں میں چولستان، صحرائے تھر، صحرائے تھل اور صحرائے خاران شامل ہیں۔ اور اسے باگر یا پھر بانگڑ کہا جاتا ہے۔ باگر کے ندن ریجن میں سالٹی لیکس ہیں جیسے کہ سامبر لیک، وہیں سدن ریجن میں بہتی ہے لونی ریور جو کہ تھار کی ایک ماتر لارج ریور ہے۔ اس کی ندن سلوپ سندھ کی سائیڈ ہے تو وہیں سدن سلوپ رن آف کچھ کی سائیڈ۔ انڈین ڈیزرٹ میں ایئرلی 150 mm سے کم رین فال ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہاں بہت کم ویجیٹیشن کور ہے۔ اور ضلع رحیم یار خان کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک بہت بڑا صحرا ہے۔ صحرائے چولستان جنوب میں پاکستان کے سب سے بڑے صحرا تھر سے جا کر ملتا ہے۔ چولستان اور تھر کا زیادہ تر حصہ بھارت کے رقبے میں آتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ایک وقت چولستان میں 3 قطاروں میں 400 قلعے موجود تھے اور کچھ قلعے تو 1000 قبل از مسیح قدیم تھے۔ انہی قلعوں میں چولستان کا مشہور و معروف قلعہ ڈیراول بھی شامل ہے، جسے دراوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ بہاولپور سے 80 کلومیٹر کی مسافت پر صحرا کے وسط میں موجود ہے۔ چولستان کے زیریں علاقے کو ہاکڑا کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے ٹیلوں کی بلندی 200 فٹ تک ہوتی ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں سے چولستان میں جہاں ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکتے ہیں، وہیں یہ مختلف شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ چولستان میں پانی کی ہمیشہ قلت رہتی ہے۔ یہ صحرا اب خشک سالی کا مستقل مسکن ہے۔ پانی کو ترستے ہوئے 2 لاکھ انسانوں کے لیے اس صحرا میں 1700 ٹوبے ہیں جو بارش کے بعد پانی ذخیرہ کرنے کا واحد اور اہم ذریعہ ہیں۔ چولستانی معیشت کا انحصار زیادہ تر گائے، بکریوں اور بھیڑوں پر ہے، مگر موسم سرما میں یہاں مختلف قسم کی دستکاری اور مٹی کے برتن بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہاں کی مٹی کے برتن پنجاب سمیت پورے ملک میں اپنی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں صحرائے تھر کی۔ صحرائے تھر کراچی سے کم و بیش 400 کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کا 16واں بڑا صحرا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا 9واں گرم ترین صحرا بھی ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 2 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جس میں 1,20,000 مربع کلومیٹر بھارت کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ صحرا دا گریٹ انڈین ڈیزرٹ بھی کہلاتا ہے۔ صحرائے تھر پاکستان کے جنوب مشرق اور بھارت کی شمال مغربی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی 350 کلومیٹر تک کی سرحد ہمسایہ ملک بھارت سے ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے تھر کا علاقہ سمندر کے نیچے تھا، پھر موسمیاتی بدلاؤ کی وجہ سے سمندر پیچھے ہٹتا گیا اور بارش کی کمی اور دیگر اسباب نے مل کر اسے ایک ویران اور سنسان نخلستان میں بدل دیا۔ اس صحرا میں تاریخی مساجد، مندر، گرینائٹ کے پہاڑ، نمک کی جھیلیں اور زیر زمین کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ نباتات اور حیوانات سے مزین یہ خطہ اپنی خوبصورتی میں منفرد مقام کا حامل ہے۔ تھر میں ننگر پارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، چھاچھرو، کھینسر اور ڈپلو کو خاص مقام حاصل ہے اور اس میں تقریباً 16 لاکھ سے زائد افراد بستے ہیں۔ مقامی آبادی جھونپڑوں میں رہتی ہے جسے چونرا کہا جاتا ہے۔ تھر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کی جھونپڑیاں شکل میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔
मोर, तिलोर, तीतर और हिरन जैसे नायाब और खूबसूरत जानवर थर का हिस्सा हैं, मगर पानी की कमी और गैर कानूनी शिकार की वजह से ये दिन ब दिन नापैद होते जा रहे हैं। सहराए थल पंजाब के एक सहरा का नाम है जिसे किसी ज़माने में दवाबा सिंध गागर कहा जाता था। ये सहरा पोठूहार और कोहे नमक के जुनूब में दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान मियांवाली, झंग, भक्कर, खुशाब और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों पर मुश्तमिल है। सहराए थल की लंबाई 190 मील और चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर है। खुशाब से मियांवाली के जुनूब का सारा इलाका सहराए थल पर मुश्तमिल है। दरियाए सिंध से निकाले जाने वाली नहर इलाके को सैराब करती है, जिससे रेत के टीले अब सरसब्ज खेतों में बदलते जा रहे हैं, लेकिन इससे इलाके का सहराईपन ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ ग्रेटर थर कैनाल का मंसूबा भी मुकम्मल किया गया है, जिससे थल की ज़मीनें सैराब होती हैं। ग्रेटर थल कैनाल का ख्याल पहली मरतबा अंग्रेज़ दौर में पेश किया गया। ये मंसूबा इसके बाद भी कई बार ज़ेरे बहस आया। पाकिस्तान बनने के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में ये मामला 1970 में भी पेश हुआ, मगर पजीराई हासिल न कर सका। बिलाखिर 16 अगस्त 2001 को उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ ने 30 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए मुख्तस किए और इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। दोस्तों, थल एक ज़रई इलाका है जिसमें गंदम, ज्वार, गवारा, बाजरा, सरसों, काले चने और सफ़ेद चने जैसी फसलें पैदा होती हैं और ये सौगात मुल्क भर में मशहूर है। थल की बुनियादी ज़ुबान सराइकी है, लेकिन कुछ जगह पर लहजे के बदलाव की वजह से इसे थलोची भी कहा जाता है। सहराए खारान शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में वाक़या है। इसे आम तौर पर रेत के सहरा के नाम से भी याद किया जाता है। ये खित्ता बुनियादी तौर पर खुश्क और भूरी भूरी रेत पर मुश्तमिल है जो ताहद्दे नज़र फैली हुई है। रकबे के लिहाज से इसका तखमीना 20,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा लगाया जाता है। सहराए खारान एक रेतला और पहाड़ी सहरा है, इसलिए इसकी ज़मीन आबपाशी का निज़ाम ना होने की वजह से ज़राअत के काबिल नहीं है और यहाँ कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। दोस्तों, खारान के हवाले से ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सिकंदर आज़म जब राजा पोरस को शिकस्त से दो चार करके वापस आ रहा था तो उसने खारान ही का रास्ता चुना था। ये सहरा पाकिस्तान के दूसरे जोहरी तजुर्बे का मुकाम भी है। पाकिस्तान ने 30 मई 1998 को यहाँ इस मुकाम पर एटमी तजुर्बा किया था। खारान की मईशत की बात की जाए तो यहाँ पर कारोबारी बुनियादों पर कपास से बने हुए खूबसूरत कालीन तैयार किए जाते हैं और पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं।